Karan? Karan, hi, The final Karan. question. That was Karan. the final question. Karan, is all well between you and Imran Khan? What? Hello. Is It's everything all well with between you and Imran Khan. between you and Imran Khan? Imran Khan and I are close professional associates and close friends. I'm extremely fond of Avantika and Imran. They are not only close friends of mine, but have had a strong association with the company. There were recent reportages that made absolutely no sense to me. Both of them are very dear to me, and I will continue to want to work with Imran, not only as an actor, but also as a friend. And I hope that puts an end to a ridiculous report that I read recently that insinuated otherwise. And in fact, Avantika is going to deliver very soon, and I think from my heart, I hope and pray that she has a great, smooth run ahead, and lots of love and success to the family. Karan, Karan, hi. This is a follow-up. Hello, Karan, hi. Hello. Here, this side. Yes. On the right? On the. Yeah. Your left. Your left. Hi. Karan, actually, Imran gave a quote to a paper saying that you didn't wish him on his birthday and you didn't make it for the baby shower. So when we asked him why, he said you Firstly, should ask he did him. not say that. That is incorrect. When he was asked by the probe, he said you should speak to Karan. Two accounts, I don't feel that this is the right platform to talk about my closeness for Imran and Avantika, who are, as I said repeatedly, extremely dear to me and will continue to be. Secondly, it's a baby shower that was more for women. It was not that it was a fraternity invite. And I don't need to be at the baby shower to wish the baby all the love possible. Secondly, wishing someone on a birthday is not something Imran would give as a quote ever. If you knew Imran dearly and closely, you would know that nobody is like this and nobody sits and talks about who wishes who on Twitter or not. It's just ridiculous. And the fact that a story like this can actually find screen space and media space is really quite abysmal, according to me. Karan, okay, there are... Hello. No, I have another question, Karan. Hello. I have another question. Can we just take Hi, can I complete my we just question? finish one at a Can I time, finish? Karan, hi, can I Can we finish my just keep question? it one Hello? second? Can we just finish the question and am I ask about the talking to? movie? Karan, hi, can I finish my follow-up question? Yeah. Okay, so Karan, you're known for your equations with the actors, the filmmakers, new people that you work with, but these days there are a lot of reports about, your equations with people, going a little sour, be it Kareena or be it Shah Rukh. So, and, recently with your birthday also, who was there on your guest list, who was not. So what do you have to say about all that? Is any of that featuring on the promo or the poster behind me? I don't think so. Okay, That's a question for another platform. All right, could we move on to the next question, please? Alia? Your question? Your question? करण आप Yes. जानना चाहेंगे आप जैसा अभी हमने ट्रेलर में देखा डीडीएलजे की एक झलक देखी और पोस्टर पे भी लिखा है कि फिल्मी लव स्टोरी जी। क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले दिनों में हमें शाहरुख और काजोल की याद दिलाएगी इस फिल्म के जरिए फिर से वो जोड़ी देखिए आई थिंक शशांक बाय हिज ओन एडमिशन ने खुद कहा है कि ये दिलवाले जैसे मैं दिलवाले में मेरी सबसे ज्यादा मेमोरीज एक्चुअली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि आई वाज एन असिस्टेंट मेरी करियर की शुरुआत उस फिल्म से हुई है तो जब भी मैं अपने मेमोरीज के बारे में बात करता हूं या जर्नी के बारे में बात करता हूं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माय करियर इज एक्चुअली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो जब शशांक मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि ही इज ग्रोन अप अभी मैं तो कह नहीं सकता आई हैव ग्रोन अप ऑन दिलवाले अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय में आई वाज इन द फिल्म बट आई मीट अ लॉट ऑफ दीज यंग किड्स दे ऑल ग्रोन अप ऑन द फॉडर ऑफ लव स्टोरीज इन फैक्ट लव टू वेरी मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड in this generation actually is Dilwale. जिस तरह शाहरुख की अदाएं थीं, काजल की एक fragility and innocence, it became the epic barometer for love stories and nobody has been able to cross it after that. I've attempted, everyone's attempted, लेकिन अभी भी अगर आप कहो पिलर लव स्टोरी इस देश की तो हमेशा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रहेगी तो जाहिर है कि बहुत सारे जो निर्देशक हैं जवान निर्देशक जो आना चाहते हैं कहानी बताना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली इंस्पायर रहेंगे सो ऑफ कोर्स देयर इज अ झलकी ऑफ दिलवाले देयर इज एन इंस्पिरेशन बट इट्स नॉट अ कॉपी इट्स एन ओड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और जब हम कह रहे हैं जब मैं मार्केटिंग टीम के साथ बैठा हुआ था पूरी टीम के साथ तो मैंने कहा कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप ऑनेस्टली बोल दो कि आपने क्या बनाई है आपने बनाई है एक फिल्मी लव स्टोरी जिस बहुत सारी झलकियां होंगी दूसरे लव स्टोरीज की हम कभी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल है ये नया है एक ट्विस्ट अलग है वाओ क्या ट्विस्ट कुछ ट्विस्ट अलग नहीं है कुछ अलग नहीं है इस फिल्म में ये फिल्म ऑनेस्टली बनाई गई है दिल से बनाई गई है अर्नेस्टली आपको एंटरटेन करना चाहती है सबसे ज्यादा इंडियरिंग बात इस फिल्म की यही है जब मैंने फिल्म देखी थी पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन एंटरटेनिंग एन ऑडियंस इज पैरामाउंट एंड इज 100%
इन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। और बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जो इतनी ऑनेस्टली आपको एंटरटेन करना चाहती हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ ज्यादा सोच थॉट नहीं है, कोई ऐसी फिक्र नहीं है कि क्रिटिक्स क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल्स क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ये कहेगी, सिंगल स्क्रीन वाली ये कहेंगे, कुछ नहीं, कोई सोच नहीं, बस एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर है और दिल से बनाई गई है विद अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एन ओड to a pillar love story like Dilwale. लेकिन कहानी definitely अलग है from Dilwale. There is just a heartfelt, I would say a filmmaker's heartfelt dream that one day when I make a love story, I hope I can have one frame of that beautiful film in my film. And I think he achieved that. That's why we put it right at the end. I think that was very well answered. That will be the last question. Varun, Varun, my question to you. Guys, I think that will be the last Varun, question. my question. मैं दुल्हनिया, अच्छा मेरी एड आप अगले हफ्ते देखेंगे, मैं खुद जाके खड़ा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, एक दिन मैं बेहोश हो गया और जब मैं उठा तो मेरी शादी हो चुकी थी। वो एक बुरा सपना था। Varun, my question to you. Thank you so much, guys. That'll be the last question. Thank you very much. No, I think we're done. We're going to have a photo op right now. Thank you, sir. Thank you, very ladies much. and gentlemen. All of you, I know today is a big day for the national media, and I still feel to see you all in this kind of number and turnout for us. On behalf of everyone at Dharma Productions, a heartfelt thank you to all of you, all members of the media. Thank you. Have a nice day. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. This is your host signing out. Thank you so much.